I will not take anyone's attitude. It's just I go by that. So as long as I'm fair, my dealings are fair. ये नंगी होती है इसीलिए काम की. If you ever have to Google about me on this thing, बहुत अच्छी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी. पूरे कपड़े नहीं पहनती और बहुत गंदी वर्ड्स यूज़ होते हैं. मुझे the 10 years that I have worked, man, अकेले एक 150 लोगों से आपको. I am not a भिखारी. Money brings peace, man. हाय मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. Because आ रहे हैं ना offers, तो मैं बोल रही हूँ. So when something comes my way, it's not like I'm refusing things. Hi everybody, you're watching me on First Indian News with Ashish, and if you like this segment, please like, share, and subscribe. हेलो एंड वेलकम टू #Unfiltered बातें विद आशीष. और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं. ऐसी गेस्ट जो 2 साल तक लगातार एशिया की टॉप सेक्सी विमेन की लिस्ट में रही हैं. मोस्ट डिज़ायरेबल विमेन की लिस्ट में वो हमेशा रहती हैं. ऐसी टैलेंटेड, ऐसी कमाल की एक्ट्रेस हैं जो हमेशा अपने दिल की बात ज़ुबान पर रखने, आपके सामने अपनी दिल की बात रखने के लिए जानी जाती हैं. मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. मैं बात कर रहा हूँ निया शर्मा की. The gorgeously talented Nia Sharma. Thank you so much. What is such a lovely introduction. Thank you. Thank you so much. और मुझे लगता है कि हमेशा जब आपके बारे में बात होती है तो जैसे कि मैंने बोला कि आपकी हॉटनेस की, आपके काम की, आपके प्रोफेशन की बात होती है, लेकिन एज एन इंसान, एज एन शख्स जो आप हैं, जो मुझे लगता है कि जो मैं बहुत अडोर करता हूँ. आप दिल से अपनी बातों को रखती हैं, कभी डरती नहीं हैं. मैं कोशिश करना चाहूँगा कि आपके जो फैंस हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उन तक असली निया कौन है वो पहुँचे. आप बताना चाहेंगी कौन है निया? There is no facade attached to my life. I don't live by a very, very pompous attitude with a lot of flamboyance in my life. There is nothing as such. By the looks of it, if you ever have to Google about me on this thing, बहुत अच्छी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, पर उससे बिल्कुल बहुत अलग है दुनिया. And I don't like to live in that reality. How I look when I'm glammed up, how I look when I'm dressed up, how I am in front of the camera. They are very different things. This is what you do for a living. This is my profession. But I never, in my real life, have ever tried to live by that or felt very, very upmarket about it or felt very pompous about it. I've never done that. So I'm this girl who wants to make a mark for herself, who wants to build a nice life for herself and a nice, big, lavish lifestyle. But by working hard enough, by being known as a performer and earning a little respect in life, and not in terms of how I dress up and how bad do I look or malfunctions or any shitty thing that is being carried out. मुझे बहुत अलग लाइफ में प्रेजेंट किया जाता है, या फिर maybe I'm doing something in that regard, but I guess I'm far away from those things. निया, काम की आपकी बात करें तो आपका टैलेंट इतना है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो अपने दम पर इंडस्ट्री में, या ये कहें कि इस ग्लैमर इंडस्ट्री में आपने एक मुकाम हासिल किया है. लेकिन जब बात आती है आपके, तो वो टैलेंट को, आपकी एक्टिंग को, बाकी चीज़ों को साइड में रख के वो हमेशा वो ग्लैमरस अंदाज, वो हॉटनेस, ये सब को ज़्यादा आगे रखा जाता है. ये खलता नहीं है कभी आपको? खलता मुझे कुछ भी नहीं है. as long as people are writing about you, they're talking about you. It's a fortunate thing, you know what I mean. ऐसा भी नहीं है that you want to go completely unnoticed. वो भी मुझे बहुत hurt होता फिर. But now that you're being noticed, but a lot of times for wrong things, for बहुत गलत चीज़ें लिखी जाती हैं, and more so about the clothing that I do. I mean, I have a certain style. Maybe it's not पूरे कपड़े नहीं पहनती और बहुत गंदी words use होते हैं. मुझे अच्छा तो नहीं लगता है, बट आप कुछ कर नहीं सकते हो. यू आर अटैच्ड टू इट, सो यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड यू मूव ऑन फ्रॉम देयर. बट नॉट दैट माई एंटायर facade and my personality and my life is not restricted to this thing. Yes, I have only been considered glam and being considered for glam roles and all. Not that I mind it, but at the same time I want to keep the fact alive that hey, I'm an actor, I can perform also. So बस वो चीज़ें mix. इतनी ईमानदारी से बात कैसे कर लेते हो आप? आपको डर नहीं लगता कि मैं अगर कुछ बोलूँगी उसको गलत तरीके से भी रखा जाता है, जो कि रखा भी जाता है कई बार? Yeah, अभी I said I want work and this and that. Everybody just wrote कि भिखारी, निया शर्मा भिखारी बन गई, निया शर्मा के पास पैसे नहीं है, काम मांग रही है.
I don't know when did I even say it. When did a line called beggars can't be choosers, and I need work. ये कब बन गया कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं बहुत गंदे तरीके से प्रेजेंट किया गया है. पूरे पूरे वीडियोस आए हैं कि टैलेंट होने के बावजूद निया शर्मा के पास आज काम नहीं है, मांग रही हैं काम, और ऊपर से फिर नीचे कमेंट्स आ जाते हैं ये देखो ये नंगी होती है इसीलिए काम की. सो बहुत ही गंदी लाइट में प्रेजेंट किया जाता है, विच आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट इन हिंदी पब्लिकेशन स्पेशली फॉर द चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट यू. अभी मुझे पता है कोई रुकने नहीं वाला, लेकिन वो उस लेवल पे क्रॉस जाती हैं जहाँ पे वो कहीं का मतलब कहीं निकल के आ जाता है. एंड फॉर जस्ट ऑन रिकॉर्ड, I am not a vikari. I'm very well to do man. I have enough money for myself and I'm living very well. There's certain things, it's just that you always want work. I mean, no matter how much money I have, I still want to go out there and work. I've sat in a while and I've been looking for nice, good projects. That's it. But doesn't make me a vikari in any way and that I'm fishing and that I'm looking for, no. And about ईमानदारी, anything other than what is happening with me, अगर मैं बात करूँ तो मैं फंबल मारने लग जाती हूँ. I can't frame things in my head. इसलिए whatever is currently happening with me is I can speak and I can frame it in words. तो मुझे इतना ही पता है. I have no idea how to make a script of in your head and then talk. कितना अनफॉर्चुनेट है कि मतलब आपके नाम पे लोग हेडलाइन बना के मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं. ये आपको कहीं वो चीज़ हर्ट करती है. अप्रेजल बहुत मिलते हैं, आपके फैंस हैं, एक अलग ही फैन फॉलोइंग की दुनिया है. लेकिन उसके अलावा जैसे कि आप बता भी रहे हो कि आप कुछ भी बोलते हो उसको अलग ही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आई बॉल्स ग्रैब करने हैं. या फिर मैं देखता हूँ जैसे कि ट्रोलर्स को देख लें जो आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक इम्पोर्टेंस के लिए या शायद वो अटेंशन सीख कर रहे हैं, वो इसलिए वो चीज़ लिखते हैं. But I feel it's been very done and dusted with the trolling parts and everything, and it's been happening with everybody. I'm not the only one. And if I am the one, I have been victim of this like long years ago. मतलब मेरी शुरुआत ही हुई थी, and I had always been a subject of all these things. तो मुझे अब मेरे लिए बहुत फेड हो गया ये चीज़ें. मतलब मुझे मेरे को बोर होता है इस बारे में बात करने में भी. सो आई नो देयर आर बिगर पीपल सिटिंग ahead of me and you know in a bigger positions who become a subject of trolls more than me. So how they handle it so gracefully, they don't have time to talk about all of these things. So I want to be the one who doesn't have time to talk about all these things. So निया, आपने तो एक पूरा फिल्टर लगा लिया है कि कैसे हेट कमेंट्स को, ट्रोलर्स को आप अपने दिमाग में या अपनी पर्सनालिटी में उनको डोमिनेट नहीं करने देते. लेकिन आपकी फैमिली का, मॉम का, भाई का, उनका कैसा रिएक्शन होता है, वो कैसे इस चीज़ को डील करते हैं? If you ever have to talk to my mom, you will see उनसे coolest lady नहीं होंगी. जितनी गंदगी at the time of my cake लोगों ने फैलाई थी for the cake that I had cut, which became very very controversial for whatever reasons. Okay, it didn't go down well with anyone. My mom took it really sportingly यार कि हाँ friends में होता है, friends ने arrange किया था वो चीज़. So she became a little nervous कि बहुत ज़्यादा फैल गया था, बट ऑल्सो शी टुक इट स्पोर्टिंगली. मुझे जाके उन्हें कन्विंस नहीं करना पड़ा. सो इन अ लॉट ऑफ थिंग्स शी ऑलवेज टेल्स मी, एज लॉन्ग एज you're right, as long as you're holding your dignity, you do whatever you want, you wear whatever you want, you live your life, I'm there with you. She always just told me never go in any wrong direction. She just is not up for it. But as long as I'm holding up to the things that I do and very fairly, she's all heart and she is the force behind me. What is Nia Sharma is made up of? मतलब कैसे इतनी टफ है, मतलब इन सब दुनिया भर की ये बातों अकेले अपने दम पे एक, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, एक नाम बना के. लेकिन इंडस्ट्री इतनी आसान नहीं है ऐसे लोगों के लिए जो इंडस्ट्री में जिनका कोई है नहीं, गॉडफादर नहीं है. कैसे, किस चीज़ से आप बने हो कि इतने चीज़ों को, इतनी निगेटिविटी को सर्वाइव भी कर रहे हो और इतना अच्छा भी कर रहे हो? Yeah, it also is very very difficult to live by your rules, whether it is in terms of taking your payment on time, asking for the right things on a set, being treated right. These are not the things that everybody gets until and unless you ask for them. And not a lot of times I have been treated very well, but you have to fight it all here. I mean, people who tell me that you are so crass and you abuse and you're so tough and you're a certain way, but look at
the 10 years that I have worked, man, अकेले, you know, एक 150 लोगों से आपको मत्था मारना पड़ता है, डील करना पड़ता है, to grab the right things, to make things right. तो वो I think वो करते करते मैं कहीं ना कहीं खुद ही अब इतनी unapologetic हो गई हूँ चीज़ों को लेके, because all I go by is that as long as I'm not wrong, I will not take anyone's attitude. It's just I go by that. So as long as I'm fair, my dealings are fair, I just expect the other person to be fair with me. And that's how I go, with the truth, with fair dealings. So a lot of things will become easier in life. You don't twist things, you don't manipulate things, you don't connive. When people start doing that, you're only losing your time, you're only wasting my time. And I don't entertain such people. So it just becomes difficult that way. And I appear most of the times rude and all, but it doesn't matter. What I can decode is कि आप बाहर से बहुत ही टफ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगते हो, लेकिन अंदर से उतने ही इमोशनल, सॉफ्ट से हो, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है. पता नहीं मैं कितना सही हूँ, वो आप सही बताओगे. I don't, but सभी ऐसे होते हैं यार. No, not everybody is just every time in a mood of fighting. Not everybody wants to bite you the minute they want to meet you. So it's just that when I meet and I'm in the vicinity of good people and I'm vibing with good people, I'm also in a good mood. The minute I meet people who are manipulative and who are conniving and who are lying to your face about things, मेरा हिल जाता है. And it's just as simple as this. You know, you want to keep things sorted and nice. And yes, in real, I'm a normal human being, yes, with a lot of emotions. I cry at a drop of a hat, and I handle situations also after crying. But everybody is like that, and I should be like that. Why? I am not somebody who's just always want to pounce on somebody. No, it's not the case, and it's everybody stays like that. इंडस्ट्री बहुत सुपरफिशियल है. आपको आपके जैसे सच्चे और वैसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आप अलाइन कर सकते हो, जिनके साथ आपकी वाइब्स मैच करती है. I don't know मैं सच्ची हूँ कि नहीं हूँ, but I'm very fairly living my life, and it's been a nice ride. I don't wrong people. It's all I know. Others do, yes they do. Others, in the name of friendship, have I been betrayed professionally? Yes. Do I want to entertain those people again? No. So I cut down. I cut off from people when I see certain I've been wronged by my own friends. क्योंकि अब dealings आ गई हैं, agencies आ गई हैं, you know, a lot of collabs are happening through people. So any hanky panky I see happening, I don't entertain that. लाइफ ने बहुत सिखाया है, मुझे ऐसा लगता है आपकी लर्निंग प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रही है. If anything else, yeah, I mean, I've not, my life has not been a bed of roses, and nobody else has had that kind of life, I'm sure. सबकी लाइफ में बहुत tough चीज़ें रही हैं. So you all learn from those things, but I also looking back, मुझे सब ऐसा लगता सब कल ही था. When that car wasn't there, when that money wasn't there, when you know, you would sit in a corner and think about life. Everything is it just looks like yesterday. So I take it in my stride, and I want to just grow nicely, like a nice, sane human being who can be dealt with. You know what I mean? What's your dream? I like to be super rich, and I want to work real hard, be known for my work, and yeah, work is my goal. Work is my dream. इसलिए आपका ये जो गाना है पैसा पैसा बहुत ही एप्ट है इस सिचुएशन में. आ जाता है कभी-कभी, you know, you certain things you manifest, and like पैसा पैसा. Also the title also of the song is पैसा पैसा. So yeah, I didn't mind doing that. मनी और पीस दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए? Money brings peace, man. No, I think both, and peace, I would say, is more important, because when you're not fine here, when you're not peaceful from within and from your heart, no money can save you in life. प्रोजेक्ट्स क्यों कम कर रहे हो आप? अब जैसे कि वो हेडलाइन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने बताया भी कि आपके पास मतलब ऐसा कोई कॉल नहीं आया जिसमें पैसे की जब बात होती थी तो लोग शायद उसके बाद से रिवर्ट करना बंद कर देते थे. क्यों कर रहे हो कम? आपके फैंस जानना चाहते हैं. आई थिंक बहुत लोग हैं जो इतने टाइम तक बैठ गए हैं, जस्ट बिकॉज मैंने मुंह से निकाल दिया कि आई डोंट हैव वर्क, वो खिंच गया. एंड आई जस्ट फील कि इट हैज़ बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शंस फॉर नो रीज़न. सब बैठे हैं यार, और बहुत खुशी से बैठे हैं, बट पता नहीं, द वे मे बी आई स्पीक इन अ वे दैट लुक्स लाइक कि हाय मेरे साथ क्या हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. जिंदगी बहुत अच्छी है, और काम आएगा तो भी अच्छा ही आएगा, नहीं आया है तो भी मैं खुश ही हूँ, मरे नहीं जा रही हूँ यार. और जिस दिन वो हालत हुई, आई विल गो एंड वर्क, आई विल टेक समथिंग अप, बट स्टॉप मेकिंग इट लुक लाइक
No, और वो हेडलाइन में भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप पैसा बहुत ज्यादा चार्ज दर की करते हो। ठोकरें खा रही हाँ। हूँ, क्या पैसे की तलाश में है, काम मांगती फिर रही है निया शर्मा। Who you want to write all of that, dude? लेकिन ओटीटी मेरे ख्याल से आपने तो बहुत पहले, जब ओटीटी, अब ये पैंडेमिक और ये सब में बहुत ज्यादा इतना बूम हुआ है, लेकिन उसके पहले से आप काम कर रहे हो ट्विस्टेड और ये सब वेब सीरीज की बात करूं 2017. So in a way 2017, that was never even the start of any OTT, you know. So यू आर वन ऑफ द फ्लैग बेरर देन। I know, but ठीक है, अभी जब हो गया तो that also garnered a lot of attention. I'm happy about it. Everything that I've done. सो अभी जो सिनेरियो है ओटीटी का, जिस तरीके का प्रोजेक्ट्स जैसे चल रहे हैं उसमें पहले तो इस रोल को कैसे देखते हो, ओटीटी जिस तरीके से आया और फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो इवोल्यूशन हुआ है काम को लेकर, उसको कैसे देखते हो? I am not in a position to be talking about all of that. For that, I have to be on a set, understanding the process of the current scenarios. I know I've been on a lot of TV show sets and for very, very long, for 2 years, but the OTT is like more laid back and nice, and your artist is being given a lot of time. So I want to work in that kind of environment where there is no pressure of the telecast. Karo, you know, next day wo jana hai. So I want to work in that kind of environment, and to be talking about the changing scenarios of Bollywood and OTT, I should be in it first, you know. कैसे रोल करना चाहते हो आप? क्योंकि टीवी में तो हर तरीके के रोल निभाए हैं आपने, मतलब मानवी से लेके और वृंदा, हर तरीके का इतना रेंज रहा है। ओटीटी में अगर काम करना हो तो कैसा रोल? I like driven, women-centric, the like those fiery, feisty girls, you know, that are there and, you know, killing, like a Kill Bill kind of a role. I would love to. तो अभी धाकड़ आई थी जैसे Something, you know, all of those things I would love, and I think I'll be good with those things. और इंस्पायर कौन करता है आपको? Everybody who works very, very hard. Everybody. You can start taking names of all the superstars and all those people that are very, very successful. But also we have to understand the fact, rather than taking just that name, you should realize the kind of hard work that has been going on. So everybody who wakes up every day making a living for themselves, making a mark out there, it's not easy. So it's everybody who is very focused, very sincere with their work. They inspire me a lot. So be it my fraternity friends, be it my contemporaries, when I see somebody doing well, they really inspire me. निया, बैक टू बैक कितने एल्बम्स आ रहे हैं, म्यूजिक एल्बम्स, उनमें आपका मतलब हर तरीके का आप किरदार कर रहे हो, ये कुछ खास वजह है या फिर क्या है कि आप अभी गानों में ज्यादा दिखाई दे रहे हो? Because आ रहे हैं ना offers, तो मैं बोल रही हूँ. So when something comes my way, it's not like I'm refusing things, right? So this is the maximum that I'm getting calls for is music videos, and I take whatever I can, whatever works out in my favor, I take them, and I'm so glad I've been doing them. Yeah, every month I'm promoting one music video. What is wrong in that? It's good, right? It's great. Yeah. कम से कम दिख रहे हो आप. भिखारी तो नहीं हूँ. वो वर्ड आपके शायद मतलब लगा है, गलत है. थैंक यू सो मच निया फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू अस. और मतलब जब भी आपको देखते हैं, आपके प्रोजेक्ट को लोग इतना प्यार देते हैं, साथ ही जैसे कि आपने बोला कि आपको मालूम है किस तरीके से आपको अप्रेजल को लेना है और कैसे हेट कमेंट्स या हेटर्स को आपको फिल्टर करना है. तो उम्मीद करते हैं आप जब भी आगे प्रोजेक्ट्स लेके आए उससे भी ज़्यादा प्यार मिले जो अब तक मिलते आए हैं, और आप इसी तरीके से एंटरटेन करते रहो. Thank you. Thanks a lot. और उम्मीद करता हूँ जो थोड़ी बहुत बातचीत हमने की वो आपको पसंद आई. I loved it. Thanks a lot.